बालरूपापि विघ्नात्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विदीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विदत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूकै अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मभद्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयतां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनां अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्ड पञ्चतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कचा पुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदैकस्तरशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभ मृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परीवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डविराजिता ताराकान्ति तिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरीकृत कर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूत तपनोटुपमण्डला पद्मरागशिराधर्ष परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री नेक्तारिरदलच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षि दिगन्धर निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्चितकच्छवि मन्दस्मितप्रभापूर मज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्दरा कनकाङ्गदकेयूर कमनीय भुजान्विता रत्नदैवेय चिन्ताग डोलमुक्तापरान्विता कामेश्वर प्रेमरत्न मणिप्रतिपणस्तनी नाभ्याल बालरोमाली लताफलकुचद्वयी लक्षरोमलताधारका समुन्नेय मध्यमा स्तनभारधरन्मध्य पट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भ वस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्गिणिकारण्य रसनाधामभूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्य माधवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणाभजङ्गिका ऊडगुल्पा कूर्मपृष्ठ जयिष्णु प्रबधान्विता नखदीदिति सज्जन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमन महालावण्य सेवदिः सर्वारुणानवध्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवास्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था
कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्थ कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगण संगात स्तूयमानात्मवैभव भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रज सेविता अश्वारूढाधिष्ठिता कोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकार मध्यका भण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विशङ्गवददोषिता विशुक्रप्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनकोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपदास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्कृत वैभव हरनेत्राग्निसन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूपमुख पङ्कजा कण्ठासकटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यदोभागदारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेभरा कुलामृदैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थि विभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढ सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर् भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयावहा शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणी शर्मदायिनी शान्तरी श्रीकरी साध्वी शरश्चन्द्र निभानना सादोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागा रागमदनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निःसंशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरध्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा शान्त्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापादकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर् महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना
महायागक्रमाराध्य महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महाताण्डव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुन्दरी चतुष्षष्ट्युपचाराध्य चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डल मध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्द विज्ञानगणरूपिणी ज्ञानध्याधृध्येयरूपा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्थी तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहता पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीट जननी वर्णाश्रम विदायिनी निजाज्ञारूप निगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुति सीमन्द सिन्दूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागम सन्तोह शुक्ति सम्पुट मौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिका अनादिनिधन हरिब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नामरूप विवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्य रणकिङ्किणि मेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्ब कुसुमप्रिया कल्याणी जगती गन्धा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वादिका वेदवेद्या विन्ध्याचल निवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वन्द्या मन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचिनी संहृता शेषपाषण्ड सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्ता समाह्लादन चन्द्रिका तरुणी तापसाराध्य तन्मध्यातमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्थ चिदेकलसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माध्यानन्द सन्ततिः परा प्रत्यक्षिती रूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गार रस सम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओढ्यानपीठ निलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिखारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लाद कौमुदी भक्तहार्दतमो भेद
भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्य शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाश मनोवाचामगोचरा चिच्चक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृति सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीम महिमा नित्य यौवना मदशालिनी मदपूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलकण्ठभूः चन्दनद्रवनिध्वाङ्गी चाम्बेय कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकार कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिपुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्ति स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रूः शोभना सुरनायिका कालदण्डी कान्तिमती शोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खड्वाङ्कादिप्रहरण वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृता डागिनीश्वरी अनागदाब्जनिलया श्यामा वदनद्वया दंश्रोज्ज्वला क्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिसत्यौहृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेत धामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिण्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्टानाम् भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाध्यायुत सम्पन्ना पीतवर्णाधिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्दिन्यादि समन्विता गद्यन्नाशक्तहृदय काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अङ्कुशादिप्रकरण वरदादिनिषेविता मुद्गौदना शक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्ति समन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौधन प्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुरोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिसेविता ताम्बूलपूरितमुखी धारिणी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिलये नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञानगणरूपिणी माद्दीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणाल मृदुतोर्लता महनीया दयामूर्तिर् महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किङ्करीभूत कमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा बालस्तेन्द्रधनुप्रभा हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी
धरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर् गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्त इति मण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालाभविमोदिनी सचामर रमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमे आत्मा परमा पावना कृतिः अनेककोटि ब्रह्माण्ड जननी दिव्य विग्रह क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपरदायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्रक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोभामुद्रार्चिता लीला क्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दायुगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिप्रजाजेत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजकृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राजलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धासागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायण प्रीता नन्दिविद्यानटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टि पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकैकी घना घना रोगपर्वतम्बोलिर्मृत्युदारुकुटारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महासना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूधिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री शुभका त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिवाकृतिः ओजोवती द्युदितरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी निस्तराजदूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामदुःखामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवदी पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा
परम् ज्योतिः परम् धाम परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविग्रस्ता वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्धिनी छन्दसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोधरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवावर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्गुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पना रहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेली तरङ्गिता कनत्कनकताटङ्ग लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुख समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्ता त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारपङ्गनिर्मग्न समुद्धरण पण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वद्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठिप्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानगणनाकल्या विदग्धा भैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्याद्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या धरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोधारा परामोधा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेदमञ्चादिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूदेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधर सुधाधन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनकाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडद्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिर् अज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैकरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. The greatness of Sri Lalitha Sahasranamam. The modes of worship have been enforced with rules and regulations in the Vedas, but the same traditions appear in a simpler and lighter vein in the ancient legends. Amid stories, one finds methods of worship ordained to each particular deity. Vyasa's 18 Puranas run into details of each deity, and Sri Lalitha Sahasranamam occurs in 182.5 verses in the form of a conversation between Hayagriva and sage Agastya at the end of Uttarakanda in the Brahmanda Purana. In spite of extolling the praises of Devi, Hayagriva restrains from reciting her sacred names. Agastya pleads with him with all devotion to do so. Hayagriva replies that Devi herself is present as the Shabda Brahman in every name, and hence the names have to be guarded with all respect and not strewn at random. They should be recited only to those who are deeply interested in her greatness. Devi Nama Sahasrani Kotishaha Santi Kumpaja. Devi has crores and crores of names, but still these 1,000 names have been the handwork of the deities of speech and oratory at her divine command, and the names are richer than the treasures of the ocean. Samudramiva Ratnadyam. The sweetness and joy of these names are beyond words of description. The chanting of these 1,000 names gives us great peace and untold joy. Namaha is an expression for reverence. How do we pay reverence to her? To build a temple of her in our hearts and minds, and to be truthful at all times. She is Namaparayana Prita, is she not? The chanting of her names shall bestow on us her grace, the peace of the inner glow, and all good that is required on this earth. Such is her greatness. But where does this greatness come from? Does it come from a land unknown or from a distance far beyond? No, from our very midst, close to us in flesh and bones as Sri Mata Sri Maharajni Srimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudhyata. Shri is a treasure forever. It knows no decay, and it is a prefix to most honorable names. Mata, O Mother, not the Devi of the scriptures nor the Almighty of the heavens, but so close to us in the form of the noblest of creation, the Mother. There is no greater temple than the Mother. Realizing this great truth, it is a Hindu religion which has given the greatest concept of God in the form of affection and love of a mother to the world and to world literature. Maharagni, to rule and to command, to protect and to provide, to quote from the Vedas, Ena Jatani Jivanti iti, by whom the created live. The seat to reign is the throne or the lion's seat. On such a seat is enthroned the empress to destroy the evil, thereby protecting the world. Srimat, the beautiful Srimat Simhasaneshwari. Oh great! From where does she come from? Chitagnikunta Sambhuta. Chitagnikunta, from the Homakunda of knowledge. Sambhuta, born. How can the eternal be born? If one is born, a start and a finish, a beginning and an end are complementary. Her history is eternal. It has no conclusion, and hence it is suitable to explain Sambhuta as descended, as an avatar. But an avatar is always a valid reason behind. Let us see what it is. Devakarya, for deeds pertaining to the gods. Samudhyata, to be engaged in. What is the reason for her avatar? Manmata was once burnt to ashes from the fiery flames of anger from Lord Shiva's eye on the forehead. The Devas, driven to pity for Manmata, gathered the scattered ashes into one heap and begged Lord Shiva to grant him life. So did Shiva. But
Unfortunately, there appeared not Manmatha, the lord of love, nor the hero of literature and romance, but a frightful demon by name Bandasura, who, taking Sonitapura as his capital, tortured the Devas. Sage Narada aptly appeared on the scene and advised Indra, the king of the Devas, to observe penance. At the end of the penance, Indra performed a yaga. From the Yaga Kunda rose Sri Lalitha Mahatripura Sundari, and the Devas sang in praise of her and begged for the destruction of Bandasura. Lord Brahma felt that it was not proper to have the coronation of Devi as the queen of Devas without her lord and master. Hence there appeared Lord Shiva in the most handsome gate of Kameshwara. The heavens rang the wedding bells with great joy. The beauty of the couple, the grace of Tripura Sundari garlanding Kameshwara cannot be described in words, nor expressed on canvas, nor molded in sculpture. Then followed the Samrajya Pattabhishekam. In which capital city did they begin their lives together? सुमेरु मध्य शृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता. Which city? Shriman Nagara Nayika. Shriman, the beautiful place. Nayika, the Queen Supreme. Friends, a little digression. Srinagar is the city where she lives with her husband in the external ritualistic worship Kaulacharam. This very Srinagar becomes Sri Chakram, where she resides as a Bindu in the center. Sri Chakrangita Bindu Madhya Vasatim Srimat Sabhanayakim. Amidst the nectar of knowledge, Sudha Sagara Madhyastha, in the internal concentrated form of worship Samayacharam. Now going back to Srinagar, where is it? Sumeru Madhya Shringastha, beyond the lofty Himalayas in the midst of Mount Sumeru. What is her address in Srinagar? Chintamani Grihantastha, the Chintamani Palace, Srinagar. The palace is inlaid with the finest of gems, Chintamani, which fulfills every wish. There she resides as the Pancha Brahmasana Sthita, putting her heart and soul in the five great actions as Brahmani in charge of creation, as Vaishnavi in charge of protection, as Rudrani in charge of destruction, as Ishwari in throwing the veil of Maya, finally as a giver of true knowledge as Sadashiva. These five variations are none other than the one and only Adi Shakti. Has the palace huge grounds around? Oh yes, they are filled with Kadamba trees, of which she is very fond of, Kadamba Vanavasini. Is that so? This Kadamba Vanavasini, where does she reside in us in the internal form of worship? महापद्माटवी संस्था कदम्ब वनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी. Mother is seated on an Atavi forest of 1,000-petal lotuses, Mahapadmam. On the crown of concentration is seated Devi, who is Kama, adorning her eyes as Kamakshi Kanchipura Vasini. As the giver of wishes, Kamadayini. The one who gives a very lot to the devotees, Kamadayini. What a blessing! Is this ever possible? Kulangana Kulandasta Kaulini Kulayogini. Born of a noble family, a family with tradition, chastity and virtue, bears the name Kulangana. Devi is worshipped at every home and hence she bears the name Kulantasta. Caste, creed and birth are unnecessary differences that are tearing society today. Devi destroys all differences belonging to one and all as Akula. Identifying herself with Shiva as Kaulani, as the supreme deity of the Sri Chakra Puja, as a permanent resident in the mind as a temple, Samayachara Tatpara. Thomas Carlyle's words, conviction is worthless unless it is converted into conduct.
If our minds get transformed into temples, that itself is a sign of her true blessing. To make a temple of the mind at all times is greater than going to the temple often with a wrong mind. Then we shall realize the presence of the 6 chakras, Mooladharam, Manipurakam, Swadhishtanam, Anahatam, Vishuddhi Chakram, Agnya Chakram in between the eyebrows. These correspond to the 6 Kshetras, Kalahasti, Jambukeshwaram, Tiruvannamalai, Avadayar Temple, Chidambaram and Kashi. The 6 chakras have 3 knots which Lord Brahma has thrown into the ocean of birth and death. They are known as Brahma Granthi, Vishnu Granthi and Rudra Granthi. Once one is steeped or always engrossed in the thoughts of Devi, she who is resting as Kundalini Shakti will snap the knotted threads and rush to the center of concentration as the Guru, and then climbing on to 1,000-petal lotus will Sudhasara Bivarshini, showering nectar, the nectar of supreme knowledge over the devotee. This only shows that the presence of the Lord is in everyone, provided we tune in. Mooladharaika Brahma Granthi Vibhedini Manipuranta Rutita Vishnu Granthi Vibhedini Agnya Chakrantaralastha Rudra Granthi Vibhedini Sahasrambujaruda Sudhasara Bhivashini. Is it only the nectar of knowledge that Devi showers on her devotees? Sahasrare Padme Saharahasi Patya Viharase. On the 1,000-petal lotus, Devi dances with joy with her husband. Is she competent enough to dance with the Lord of Dance, Nataraja? Why, even during the end of the world, she is going to be the only witness to his Mahatandavam. Maheshwara Mahakalpa Mahatandava Sakshini Mahakamesha Mahishi Mahatripura Sundari Kameshwara Prananadi Kritagnya Kama Pujita Sringara Rasa Sampurna Jaya Jalandarastita. Devi is part and parcel of Lord Shiva. Can Shiva ever dance without Shakti? Just as poetry is supreme in literature, as grapes are the sweetest of fruits, among the rasas, Shringara Rasam has lilting beauty, and that is complete in Devi, Shringara Rasa Sampurna. Moreover, Chatuhu Shashti Kalamayi, she is a storehouse of the 64 arts. Even her speech, Kalalapa, is an art by itself. Madhukshira Draksha Madhuri Madhurina Panitayaha. Music, dance, vocal, instrumental, not only the 5 fine arts, music, dance, painting, sculpture and writing, but all the 64 arts. As the creator of the Vedas, she is Veda Janani. The sindoor worn by the Devis of the Vedas are the powder dust from her lotus-like feet. Not only is she a great artist, but a great lover of art. Appreciation is the greatest of art. Art is nothing but a shadow of devotion. Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vashya Bhayabaha Shambhavi Sharadaradhya Sharvani Sharmadhaini. Devi is the university of all fine arts. She is the birthplace of all good literature. The various departments of art worship her. Sharadaya Saraswatya Vagdevi Vatabhischa Aradhya. Saraswati and all the goddesses of oratory worship her. Sharadehi Visharadehi Panditehi Aradhya. Scholars and pandits worship her. During the Sharat season and Mahanavaratri, she is worshipped by all. Such is the veneration for this Kalaivani. She is a great commentator on different subjects. Chandasara Shastrasara Mantrasara Talodhari Udara Kirtir Udama Vaibhava Varna Rupini. One who gives short but expert answers in Mercury speed to the Vedas is Chandasara. One who gives quick formulas in the scientific field is Shastrasara. To the mantras, Mantrasara.
She is the very structure of the words Varnaha Chatuhu Shashti Sankhyaakaha Rupamasyaha Varnarupini. Mahatantra Mahamantra Mahayantra Mahasana Mahayaga Kramaradhya Mahabhairava Pujita. Seated above the 36 tattvas, personified in the puja chakras, and overlord of all austere worship and revered by Bhairava himself. Varanam is creation, Ramanam is protection, and Vamanam is destruction. Mahabuddhihi, she is a great intellectual. Kavyakala Guhya Rupini, she is Saraswati herself. A person of great learning is respected wherever he goes. That's right. But what about his bank account and a reasonable property to dwell? Rajarajeshwari, Rajadayini, Rajavallabha, Rajatkrupa, Rajapita, Niveshita, Nijashrita. An empress over monarchs and kings, the supreme queen of the heavens. Not only empires, but Kailasam and Vaikuntham, the heavens. People who possess empires should also have the heart to give. She is ever ready to give her own seat adorned with Rajalakshmi to her devotees, Samrajyadayini. She is Govinda Rupini, Maheshwari, Mahadevi, Mahalakshmi. Wealth and grace adorn her with the greatest of names, Mahalakshmi. Panchashat Pita Rupini. What are her favorite resorts? Varanasi, Nepalam, Kailasam, Kedaram, Omkaram, Haridwar, Ujjain, Hastinapur, Kanchi. Sringararasa Sampurna, Jaya Jalandharastita, Odhyana Pita Nilaya, Bindu Mandala Vasini, Para Pratyakshiti Rupa, Pashyanti Paradevata, Madhyama Vaikari Rupa, Bhakta Manasa Hamsika. 51 Pitams. Is it possible to travel to all of them? Sweet content, as Shakespeare said. If we make our minds a calm place, then Devi would reside in perfection as Hamsika. This graceful Hamsika has only to issue a single order by the wink of her eye. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Kamala Koti, crores of Lakshmis at her command. Learning and wealth are profuse and abundant in her. But what about courage and valor? As Churchill said, courage is the first of human qualities because it is a quality which guarantees all others. Nistula Nila Chukura, Nirapaya Niratyaya, Durlabha Durgama Durga, Dukkha Hantri Sukha Pradha. One who wipes sorrow and grants joy and happiness is Nistula. One who has deep blue hair is Nila Chikura. One who is not attainable so easily is Nirapaya. No one to excel her is Niratyaya. Not so easily approachable is Durgama. To get an appointment with her is difficult, Durlabha. And finally, all valor is embedded in the word Durga. Durga means fort, and to capture a fort one has to have a great army and great chivalry, and that is Durga. Her army must be a great one. Devarshigana Sanghata, Stuyamanatma Vaibhava, Bhandasura Vadodyukta, Shakti Sena Samanvita. The Devas and sages sing in praise of a great valor in defeating Bhandasura's army. Shakti Sena Samanvita, all in crores. Ratha Gaja Turaga Padati. Chakra Raja Ratharuda, Sarvayuda Parishkrita, Geya Chakra Ratharuda, Mantrini Parisevita, Kiri Chakra Ratharuda, Dandanada Puraskrita, Jvala Malini Kachita, Vanni Prakara Madhyaga, Banda Sainya Vadodyukta, Shakti Vikramaharshita, Nitya Parakramatopa, Nirikshana Samussukha. Sampatkari, chief of the elephant wing. Ashwaruda, head of the horses regiment. Mantrini, the supervisor, sitting on the chariot named Geya Chakra. Dandanatha, the pilot. Jwala Malini, what is her work? She wears a garland of fire and protects Devi, constructing a fire fortress around her.
Thus 15 Nitya Devis from Kameshwari to Chitra thus serve in her army. ಬಂಡಪುತ್ರವದೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲ ವಿಕ್ರಮನಂದಿತ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಭಾ ವಿರಚಿತ ವಿಶಂಕವದ ದೋಷಿತ. 30 sons of Bandasura who fight with them is Bala, the 9-year-old Durga. 9 is the greatest of numbers, for after 9 all the other numbers are only duplicates. Devi, seeing this great battle, is overwhelmed with joy, for the 9-year-old is her own Swaputri. Then Bandasura's brothers Vishangan and Vishukran are killed, and in great joy she looks at Kameshwara. ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹಿ ವೀರ್ಯನಂದಿತ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರ. ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರ. Asuras threw obstacles after obstacles to defeat the enemy, but these obstacles were shattered to pieces by Ganeshwara. Is that so? Does Devi have only one son? No. Her Swarna Garbham is Guhya Janma Bhuhu, the birthplace of Guha, the birthplace of Subramanya. Now going back to the battlefield, Shastram Pratyastram, shafts one after the other. Then comes the greatest army, and from where? From her fingernails. Karanguli Nakotpanna Narayana Dashakritihi. Matsya Kurma Varaha Narasimha Vamana Parashurama Rama Balarama Krishna Kalki. The Asuras are all defeated. The final weapon, the greatest of all, she uses her husband's Kameshwarastram. Devi surrenders all her powers to her Lord, giving him full credit. And with this great weapon, she kills Bandasura and burns his capital. Brahmopendra Mahendradi Deva Samstuta Vaibhava. Brahma, Vishnu and Indra sing in praise of this great might. Finally, Manmata comes to life again because of her Dayamurti, because of her Karuna Sagaram. To forget like a child and to forgive is divine. Devi is the treasury of all good nature, Gunanidhi. She is Gomata, full of mercy. The quality of mercy is not strained, it droppeth as a gentle rain from heaven. Manaswini, Manavati, Maheshi, Mangalakritihi. Devi has always a good heart, Manaswini. Always does good, Mangalakritihi. Always is broad-minded, Manavati. Kamya, she is liked by one and all. Not only a good social worker, but a good wife too, Sadashiva Kutumpini. Home is the one place in all this world where hearts are sure of each other, where even the tea kettle sings of loving kindness. That is home, and God bless it. The beauty inward is reflected on the face outward. Udyadvanu sahasrabha chaturbahu samanvita ragaswarupa pashadhya krodhakarankushojvala. She is like the rising of 1,000 crimson suns. The 4 hands represent Krita Yugam, Treta Yugam, Dwapara Yugam and Kali Yugam. She holds the thread of affection in one hand. As Lawrence Sterne said, "'Tis sweet to feel by what fine spun threads of affection our affections are drawn together." Temper is a valuable thing, and it is to be used when necessary, and hence she holds the axe in the other. And holding the sugar cane, she says that each one's heart has to have the sweetness of it all. And her other hand holds the 5 subtle elements, the 5 different senses which should be directed towards a good goal. ವದನಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನ. Her face is Manmata's abode, and Toranam is her chillika, the eyebrows. And in her beautiful face are fishes swimming, Chalanmeenabhalochana, those are her beautiful eyes. The beauty of her nose. ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತ ತಾರಾಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರ. Her nose is like the just bloomed champaka flower,
Then her cheeks smooth as carved out of one Padmaraga gem, flawless and glowing. Her lips more beautiful in color than the fruit of the coral weed. And then शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला कर्पूर वीटिकामोध समाकर्षिति गंधरा. her set of teeth like the buds of knowledge, one after the other. Her speech, Sallapa Madhurya, beats hollow even the sweetness of the veena. Mandasmita Prabhapura Majjat Kamesha Manasa. Her gentle smile is soothing, the glow of which intoxicates Lord Shiva, and he loses his heart completely to his dear wife. Sarvaruna Anavadyangi. Her complexion is all red. Sarvabharana. This beauty is enhanced with beautiful ornaments worn by her. First comes अष्टमी चंद्र विभ्राज दलित स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका. She wears a tilakam on her forehead in the shape of a crescent moon. Then तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण बासुरा. she wears the brightest of stars, the best of the blue jagger on her nose. Her earrings are made of silver and gold, the sun and the moon. कदंब मंजरी क्लिप्त कर्णपूर मनोहर ताटंग युगलीभूत तपनोडुब मंडला. Her necklace is made of red and gold and with dangling pearls. कनकांगत केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेय चिंताक लोला मुक्ता फलान्विता. The best of all, the gentle smile, the jewel of one's soul. Kamesha Baddha Mangalya Sutra Shobhita Kandara. The one that keeps the smile eternal is none other than the Mangalya Sutra, the string tied by Lord Kamesha on her wedding day, Shobhita adorning her neck Kandara, chanting these auspicious words. सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी. Oh really, she is Sarvamangala. Devi is all prosperity. How are we to venerate this great one? How are we to recite her Sahasranamam? दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी. Mother is the mudra of knowledge. Mother is attained through knowledge. Mother is personification of knowledge itself. Mother is Sampradayeshwari, tradition bound. Traditions keep one's originality intact. She is fond of the 10 mudras which are used for her worship. She is fond of Yajnapriya, yagas, and the fragrance of the lovely pure ghee poured into it with the chanting of Swaha. Oh, she seems too far away. Tradition seems a distant law. Maybe we have to please her only in the next Janma. Oh no, she is not stubborn, she is understanding, Samaradhya. If one would offer her a plain heart which thinks well, faith is like a boomerang, use it. It will come back to you in greater measure. Saubhagyadayini, Sarvavyadi Nivarani, Dhanadanya Vivardhani. Why? She would easily give us salvation, the best award of all, much superior to even the Nobel Prize. Kaivalya Padadayini. Taking a glance at this most beautiful Sahasranamam, which can be chanted at any time and at any place, or wishers of tradition can chant it with all the Kramaradhya, sophistications of ritualistic worship, one would observe the 3 Shris at the beginning and at the end. Shri Mata, Shri Maharagni, Shrimat Simhasaneshwari, Shri Chakraraja Nilaya, Shrimat Tripura Sundari, Shri Shiva. Shri is the eternal treasure, Shri is the eternal Shanti, Shri is undisturbed peace, which Shri Lalitambika gives, which Shiva Shakti grants, as Devi is all auspicious Sarvamangala. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते।